Okay, so the recording is started. जस्ट अ हेड्स अप, आज कुछ बैकग्राउंड नॉइज हो सकती है मेरे इधर, तो आई एम सॉरी फॉर दैट ऑलरेडी. राइट, द एप्लीकेशन हैज स्टार्टेड. ठीक है, तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं क्या किसी के? नो. नो सर. ठीक है, तो किसी और को क्वेश्चन तो वो पूछ सकता है. अभी यहाँ आशीष गौतम. हेलो. हाँ जी, कुछ क्वेश्चंस हैं क्या? जी सर, अभी कुछ बोल रहे थे. हाँ जी सर, NG4 के लिए कोई और अल्टरनेटिव है इसका, मीन लूप के साथ, जैसे हम विजिट कर रहे हैं प्रॉपर हर एक रिकॉर्ड को. मतलब आइट्रेशन के लिए पूछ रहे हो कोई और कंस्ट्रक्ट है या नहीं? एग्जैक्ट सर. नहीं, मतलब जैसे वी आर फेमिलियर विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिनमें वाइल लूप, डू, फॉर, ये सब लूप्स होती हैं. एंगुलर में टेम्पलेट लूपिंग के लिए सिर्फ फॉर लूप है. ओके सर. ओके, एंड दिस ब्रिंग्स टू अनदर डिस्कशन कि अगर मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मेरे को उस ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ पे आइटरेट करना है, तो कैसे करूँगा? जैसे फॉर ऑफ लूप है जावास्क्रिप्ट के अंदर. I'm just discussing this so that those who don't know, like this can be useful for them. Suppose I have an object, say where object which has 4 properties maybe. For of loop पता है किसी को क्या करती है? Okay, so suppose I have this object, and the loop we had discussed last time was for for of हमने डिस्कस करी थी. for in की मैं बात कर रहा हूँ इस पर. फॉर इन सर वो आपको वो कीज रिटर्न करेगी. हाँ जी, हाँ जी, की ऑब्जेक्ट के अंदर. होगी. और अगर सेम थिंग्स में भी आप एरे के लिए यूज करते हैं तो वो इंडेक्स रिटर्न करती है की इन, अगर एरे के लिए यूज करते हैं. एग्जैक्टली, क्योंकि वो क्यों करती है वैसे? सर इतना सोचा नहीं उसमें. अच्छा, दिस इज अनदर सिंटेक्स टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑन ऑब्जेक्ट. अभी तक हम क्या करते थे? ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी करते थे ना. बट इन जावास्क्रिप्ट there is another way to access properties on an object, that is this array notation. इस array के अंदर हम की का नाम डाल देंगे, तो we will be accessing the property on that object. Okay, let me show this. So पहले मैं की प्रिंट कर रहा हूँ और फिर उसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, and then the second key and its value, then the third key, then its value. ठीक है. So for in is used to get the keys from an object. ठीक है, यही अगर मैं इसमें for off कर दूंगा तो it won't work because this is not an iteratable. ठीक है, तो यहाँ पे एक एरर आएगा स्क्रीन पे which says this is not iteratable. ठीक है. So in order to make this iteratable, we can do one thing. There is a class called object which has a function called keys. What I have done here is ये मैं अब वो चीज़ बता रहा हूँ कि अगर मान लो कि तुम्हें फॉर इन यूज़ करनी हो टेम्पलेट के अंदर, बट क्योंकि तुम्हारे पास फॉर ऑफ के अलावा और कोई लूप नहीं है, तो क्या करेंगे? तो उस केस में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की कीज़ की एक एरे बना लेते हैं. ठीक है,
उस एरे को फॉर ऑफ लूप से लूप करते हैं और फिर से ये चीज़ चल जाएगी। डिड आई मेक सेंस? सर ये एक बार दोबारा बताना। हाँ, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर आइटरेट करने के लिए जो लूप है ना, दैट इज फॉर इन, ठीक है, यस दिस वन। बट व्हाट आई वांट इज आई वांट टू व्हाट आई यूज, वांट इज आई वांट म्यूट कर लो प्लीज। I want to use the for of loop but on this object. So पहले अभी हमने अगर डायरेक्टली इसको करते हैं हम, for of यूज करने की कोशिश करता हूँ तो इट थ्रोज एन एरर। यहाँ पे अभी दिख ही रहा है टाइप एरर, दिस इज नॉट आइटरेटेबल, ठीक है। सो व्हाट कैन आई डू टू मेक दिस एन एरे? तो हमारे पास एक क्लास है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, इट हैज़ अ मेथड कॉल्ड keys. And what this method does is it takes in this object and converts it to an array of keys. So all the keys in this object, I get an array of those, and then I am iterating over that array, and I'll get one key at a time, and then I'm doing the same thing. Okay, so this will work. ओके सर। ओके, सो व्हाट दिस मीन्स इज, अगर आपको एरे पे आइटरेट करना है तो आपके पास फॉर ऑफ लूप है। अगर आपको ऑब्जेक्ट पे आइटरेट करना है ना, तो आपको ऑब्जेक्ट को एक एरे में कन्वर्ट कर लेना है, कीज की एरे में, और फिर उस पर आइटरेट कर लेना, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? वो सर वो आंसर आंसर चाहिए था सर। क्या इन लूप यूज करते हैं एरर के लिए तो वो इंडेक्स रिटर्न करती है, तो आपने बोला था क्यों? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो हम एक एरे बनाते हैं। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अच्छा, क्योंकि वो उसकी जो कीज होती है वो 0 1 वो कीज ही होती है एग्जैक्टली। सो अगर तुम टाइप ऑफ ये भी करोगे ना, सो दिस इज एन ऑब्जेक्ट एंड इट हैज़ दीज प्रॉपर्टीज, एंड दैट इज़ द रीज़न कि अगर मैं एरे वन को ज़ीरो पास करता हूँ तो क्योंकि ये की एग्जिस्ट करती है तो ये मिल रहा है। और यही अगर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया होता ये वाला, और इसके अंदर भी मैं एक की ऐसी बना लेता हूँ जो कि एक नंबर है, सपोज दिस, ठीक है। और अगर मैं OB1 एक्सेस करने की कोशिश करूँगा देन आई गेट द सेम थिंग। ओके, मेक सेंस? ओके, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, सो एरे इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। चलो, दिस वाज अ सेपरेट डिस्कशन, दिस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ एंगुलर। ऑलराइट, सो जो मैंने अभी उस ग्रुप पे वो लिंक सेंड किया ना, दैट इज दिस वन, क्रिएटिंग अ फीचर कंपोनेंट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अभी तक हमने एक ही हीरोज कंपोनेंट बनाया था, उसी के अंदर हम इसकी ये जो डिटेल है ये अपडेट कर रहे थे, ठीक है। So what I want to do is I want to extract this thing out into a separate component. So what will I achieve with that? So the thing I am going to achieve with that is separation of concerns. एक एक section of application जो है ना, that is going to be encapsulated inside one component. So what that means is, if I want to change that particular functionality, I need to change that component only, and this can be shared across multiple places. अभी मान लो कि ये लिस्ट ऑफ हीरोज़ है, एक और स्क्रीन हो जो कि आपके फेवरेट हीरोज़ की हो, ठीक है, और आपको वो फेवरेट हीरोज़ को भी एडिट करना है। तो उस केस में अगर तो मैं इसको इनकैप्सुलेट नहीं करता हूँ अलग कंपोनेंट में, तो सेम फंक्शनैलिटी जो मैं यहाँ लिखूंगा उधर भी लिखनी होगी, ठीक है। बट इफ आई एक्सट्रैक्ट आउट दिस कंपोनेंट इनटू अ सेपरेट वन, सो आई कैन रीयूज दिस पीस ऑफ कोड, ठीक है। So the entire focus of Angular is to break down the bigger problem into smaller ones and then solving those. Okay, so let's start to do that. I'll open a new terminal and I'll say ng generate component hero details. Okay, so I have got this component here and it has updated the app module. Okay, and it has added this guy here in the module. But for now I want to do it in a different way. I'll delete this
and this one also. Okay, I'll delete this folder as well. Okay. So till now we have been using the CLI to create components. I want to show you how do you create a component without using a CLI. Okay. Because once you start to understand that thing, it will give you greater insights into the framework. So I'm going to name the folder hero details. ETA. Okay. So here is the folder, and now what I want is hero details dot component dot ts. So this is the component file which we are going to use. Inside this, I need to import something from a module in Angular, that is code. And I have imported this component decorator. Okay. And what decorators are, they start with the @ symbol and then the name of that. This guy takes some metadata. Okay, hero details component. Alright. So at this point, I have a component. I have not specified this metadata. Let me do that. So there are two minimum requirements for a component. It should have a selector. Okay. So this I am saying that is going to be the selector for this guy. And the other property is like till now we have been using template URL. I could also use the template property. Okay. And right now it is having just a word called details. Achha. Once I have created the component, I need to declare that component inside a module. So in app module, I have pasted, what was that? Hero details. DET. Okay. So I have to import this before I use it. Okay. So I have this component now. Let me see what is it. स्पेलिंग गलत है क्या वहाँ पे? सर import component from लगाना भूल गए. Okay, sorry. Alright. So this will import this decorator from the Angular module, core module, and I have created this component now. And let's try to use this. And one thing to notice, पहले जितने भी कंपोनेंट्स थे उनके अंदर बहुत सारी फाइल्स थी, 4 फाइल्स एट मिनिमम थी सभी के अंदर. ठीक है. दिस गाय हैज़ ओनली 1 फाइल. ठीक है. So this is an important distinction. Let me use this hero details inside here. Instead of editor, eventually I want to use this component, and I'll comment out this one. Let's see what happens. Okay, so I can see the word details printed out here. Okay. So this is a component which has only one file. It has an inline template, and it does not have any CSS or any other files. Okay. Okay. I'll try to do a few things now. So we have already discussed the input property, which is used to transfer data from a parent to the child, right? So I'll use an input decorator, and I'll say
pass in a hero that is going to be of type hero. Okay, and as I am typing, this editor is giving me some hints, and when I click enter, it already imports these required things. Okay. Okay, so now what I want here is I'm using backticks. Uh, this is something to note. If I use single quotes or double quotes, I won't be able to split this template into multiple lines. But since I am using backticks, I can use that. I can split this into multiple lines. Okay. So now suppose this guy can have the entire HTML written here, and I want hero dot name to be displayed here. Okay. So by now I should not see anything because hero क्या है अभी तक defined नहीं है यहाँ पे. Now let's go to the heroes component, and this guy has got an input property that is called hero, and I can bind it to the selected hero. So now what this is doing is whenever I select a hero, this property gets that hero, and that property is being passed to this details component. So this way, whenever I select it, that value goes inside the child component. Okay, make sense till here? Yes, sir. Okay, so now what I want is I want to extract this template and put it inside the hero details component. Now I could do this in a separate template file, but I can do this inside here also. So this is not going to have selected hero. The property name is hero here. Okay. Okay, so I have editor, hero ID, hero name. All right. Okay. So now, as it was working previously, it is working the same. And again, when I change this, it is changing the actual object. That is because the same reference I am passing to this component and the input variable here, hero, this is having the same reference to that object. And when I try to change it, it is changing the actual object inside the array. Okay. Okay. So this is about a component. Now suppose I want to style this guy. Okay, and for that also I can use inline styles. Previously we were using the style URLs array, this one, but I can use the styles array as well. Okay, this again can take backticks, and now suppose I want to style all the inputs to have a padding of say 0.5 rems, border radius of say 4 pixels, and I don't know, say border 1 pixel, solid gray, maybe like this. So now the text boxes look a bit different. Another thing I want to do is I want this guy to have a display of flex, right? And on these input elements, I want to have a margin of 0.5 rems. Okay, so this is that component now. It looks a bit better than before. Okay, so here on top I can put an H1, edit hero. Okay, so now it should look a bit good. So this also had to be inside here. Why this edit hero was visible previously? Because
like even if the hero is not defined, this h1 was outside of this ng if. Okay, if I put it inside, then this will also be displayed once the hero is defined. Otherwise, it won't display. Okay. And I don't want to display this if the hero is not defined, so I have put it inside. And that is going to cause a problem because the CSS we have, that is going to cause a problem actually. I'll create another element here. I'll call that. Okay. Now it should be fine. Okay. Edit hero. I can edit it, and then I can change it. Right. Okay, so this gives us a glimpse of a simple component which does not have much of logic. It has an input property which I have bound to its template, and this is an inline template. We don't have a separate file for it. The styles also, we have those inline styles. We have not extracted them out to a separate SAS file. Okay. Any questions still here? सर इस कंपोनेंट के साथ बाकी फाइल्स क्यों नहीं मतलब बाय डिफॉल्ट आई? क्योंकि इसको मैंने CLI से नहीं बनाया. I deleted the component which I created from CLI, and then I created this file on my own. So, Rohit, what is a better approach? I mean, shouldn't we be having sort of CSS and HTML files separate from the TS file? Yes, exactly. We should have that. This is just to demonstrate that for a very simple component, we can do it this way also. अगर आपके component की template is not more than 3-4 lines, then you can go with this inline template. Otherwise, every time you should extract a separate file of HTML and CSS. Okay. Since this was going. So essentially. Yeah. Yeah. Go ahead. Yeah. I'll ask. No. You can go ahead. So what I was trying to ask. So essentially, this template keyword is just telling this file that here comes the HTML and CSS. Right? Exactly. So the other properties are template URL and style URL. Template URL, and then the second one is style URLs. It is a plural. Okay, that means it takes an array of styles. Means it takes array of URLs which can have different styles. Okay, and in the first session we discussed that we can have multiple CSS files applied to the same component. Here also this guy is styles and it is taking an array. This means I can have another string which can define another styles for this guy. And we could even have another file of styles as well, right? I have never tried having styles and style URLs together, but I think that would even work. Okay. All right. So we are good with this. Then we can start moving towards services. Right now, inside this component, heroes component, I have this heroes object, and going forward, we won't have this static data. We'll be having this out of some service, maybe some backend service, right? An API endpoint. So the correct way to implement such kind of things is we should have a service which is going to pull data from the server and then provide that data to the component. Okay, so I'm going to extract a service right now. I could do that from the CLI. Rather, let me do it with the CLI, and then I'll means explain that. We'll delete that and then create one by hand so that you know what is happening behind the scenes. So I have heroes tour. Okay. So I want to create a service ng generate.
I could write service, but there's a shorthand ng generates s that stands for service, and I have to define the path where I want to create the service. So I'll say heroes slash heroes. If I say this, it will inside the heroes folder, uh, and I just realized the spellings are incorrect. So this should be the correct ones. Okay, so ng generate heroes slash heroes. So this will create a heroes service inside this folder. Okay, so this is the service, and since I am using the CLI, it has already created a spec file for me as well, which is going to be used for unit testing this service. I don't require this as of now, but let's go through what is inside this service at this point. Uh, okay, so this is again a decorator, as we had for the component. The components have this component decorator. If I go to the module has an ng module decorator. Now the service has got another decorator that is called injectable. They could have had a decorator called service, but there's a reason they chose injectable, because there's a concept of dependency injection inside Angular. So what we can do is we can inject this service into any component based on where it is accessible. Right now it is accessible everywhere because I have provided it in the root provider. Okay, so the root provider is basically like the platform. The entire application can access this service. Before going further, I want to let you guys know that these decorators are nothing but functions. Okay, let me go to the TypeScript website. Okay, I'll go to the docs. No, handbook. And here I should have something called decorators. Can I search? Here we are. Okay. So I'll read out this thing. A decorator is a special kind of declaration that can be attached to a class, declaration, method, accessor, property, or a parameter. Decorators use the form at expression, where expression must evaluate to a function that will be called at runtime with the information about the decorated declaration. So this can be a lot of it, but let me open the playground and I'll show how decorators work behind the scenes. I want to open the playground. I'm not sure what TS configs I need for all of this, but let's see. Okay, now suppose I create a function that is called logger. Okay, a function has to have these parentheses, and inside here I'll simply log hello. Okay, and now what I can do is I can decorate this class what is it saying, except who few arguments to have. Okay, it has to return a function also. I'm sorry. What's the problem? Did you mean to call it? नहीं यार. This guy has to take an argument. Okay, so this was not required actually.
So this is going to be the constructor, I suppose, and let me, after hello, I want to console.log this argument also. Let's see what happens. अच्छा, अभी जैसे ही मैं ये लिख रहा हूँ ना, so it is generating the equivalent JavaScript for this, and if I copy this entire thing, if there is a run section, I don't remember where that is. Will this, yeah, run. Okay, I'll open the console and I'll click the run button. And where is that now? Yeah. Before I do this, let me create an instance where x equals new student. Okay, so now if I run this, so I see दो console logs आए यहाँ पे. One is hello and the other one is the constructor. मतलब ये जो function था इसका, that was an argument of this function or this decorator, and I have printed out those two messages. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर मैंने ये दो console logs लगाए हुए हैं. So now suppose inside this arg, this is a function dot prototype. Those who know JavaScript in detail, they will understand this, but I'm just trying to override the definition of this class. So okay, and now suppose console.log x does not has a name property. Okay, but what I'll do is I'll convert this to type any so that I can write anything. I'll say my name is, okay, so that's it. Let me run this. Okay, so now if you see this, it is saying my name is Rohit, but student class के अंदर name नाम की property नहीं है. All I have done here is I have decorated this class with this guy called logger, and it is basically changing the definition of the class. Okay, and any questions at this point? सर जैसे लॉगर फंक्शन है उसमें आर्गुमेंट के बाद एनी लिखा हुआ है, अगर इसमें लॉगर के अंदर स्टूडेंट क्लास के अलावा और कोई भी क्लास होती तो लॉगर फंक्शन के साथ हम उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं? हाँ, तो कोई भी क्लास लिख लो. लेट्स सपोज क्लास एनीथिंग, ठीक है, एंड आई विल डेकोरेट दिस विद लॉगर. सो दिस इज द सेम थिंग. अभी मैं एनीथिंग का ऑब्जेक्ट भी बनाऊंगा तो उसके अंदर भी नेम प्रॉपर्टी आ जाएगी, क्योंकि मैंने इस डेकोरेटर के अंदर वो नेम प्रॉपर्टी ऐड करी है. इफ आई रन दिस नाउ, सो द क्लास इज एनीथिंग. इसको क्लियर कैसे करते हैं? बट यहाँ पे दिख रहा है आपने को, नेम इज रोहित, स्टिल विजिबल. Yes, sir. Okay, so why I am telling this is because most of people out there don't know that these decorators are nothing defined in Angular. The concept of decorator is coming out of TypeScript. It's just they have created these decorators inside the Angular core, but the concept is not the one from Angular. It is from TypeScript, and inside Angular they have written functions like this, like injectable, component, ng module, all those, and they are actually capturing the constructor of this class and then doing something on that. Okay, does it make sense? Yes or no? No, sir. No, it doesn't make sense. What's the question? सर अभी जो रिसेंट में इस वाले स्क्रीन पे बताया वो रिपीट कीजिए. ये वाला जो मैं बोल रहा हूँ, अब क्या है कि इंजेक्टेबल नाम का एक फंक्शन बनाया हुआ है एंगुलर ने, ठीक है.
and that is working as a decorator here. It basically takes in the constructor of this class, uh, the constructor function of this class, and modifies it in such a way that it is created into a service, and it also registers this service with the DI system of Angular. So क्योंकि उसके पास इसका कंस्ट्रक्टर है, तो वो उस कंस्ट्रक्टर के साथ कुछ भी कर सकता है। जैसे मैंने इस कंस्ट्रक्टर के साथ कुछ छेड़खानी करी, उसके अंदर एक नेम प्रॉपर्टी ऐड कर दी, इस तरह से एंगुलर भी उस कंस्ट्रक्टर के साथ कुछ भी कर सकती है। ओके सर। ठीक है। सो व्हाट एंगुलर इज डूइंग फॉर कंपोनेंट्स इज, जब मैं इस कंपोनेंट डेकोरेटर से डेकोरेट करता हूँ ना इस क्लास को, तो डेकोरेटर में मैंने टेम्पलेट का यूआरएल दिया हुआ है। ठीक है। व्हाट एंगुलर डज इज, वो इस डेकोरेटर में से इस यूआरएल को निकालती है, उस टेम्पलेट को फेच करती है, और उसको इन प्रॉपर्टीज़ के साथ जहाँ जहाँ पे भी बाइंडिंग करनी है वो सब बाइंडिंग कर देती है। ठीक है। सो बिहाइंड द सीन्स देर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क विच इज़ गोइंग ऑन, which we as developers on Angular don't know what is going on behind the scenes, but there's a lot of work which is being done. ठीक है। एंड लाइक जैसे उसमें एक्सेस किया था तो इसकी भी टेम्पलेट उठा के तो उसमें अपना कोड भी इंजेक्ट कर देती है सर्विस। हाँ, तो जब हमने पहले सेशन में देखा था तो हमने ये देखा था कि टेम्पलेट के ऊपर ना कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट्स ऐड हो जाते हैं। वो स्पेशल एट्रीब्यूट्स भी जो है वो एंगुलर ऐड कर रही है, दो वो बिल्ड टाइम पे ही कर देती है, वो रन टाइम पे नहीं होता। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रन टाइम पे हो रही हैं। ठीक है। ओके, alright, so we had started with the services, and okay, at this point all I want to do is I want to add a method here called greet, and then maybe return a value called hello. So now what I want is I want to take this service and inject it in the heroes component. And how do dependency injection works is, हम कंस्ट्रक्टर के अंदर एक आर्ग्यूमेंट ऐड कर देते हैं, and Angular will take care of hydrating that argument. So here we have the constructor. I'll say what's that, heroes service. This is going to be of type heroes service. So import करना पड़ेगा, import statement hero service जो स्पेलिंग करता है क्या, HEROES, अच्छा हाँ ओके। मुझे स्पेलिंग नहीं आता इसका मतलब हीरोज के, HOOHERO चल ठीक है, हीरो सर्विस लिखा हुआ है। ओके, so what I can do here is I can take this hero service and it has a method called greet. I'll put it inside console log, CONSO dot log. Okay, so once the constructor of this component gets executed, it will take this service, call its method greet, and then whatever value it is returning, it will log it to the console. Okay, let me show you. Property greet is not on hero service. Okay, I didn't save this file. Okay. So here, if I see this, so this hero service variable has an instance of class hero service, and it has a method called greet. Okay, and if I go inside this method, all this method does is it returns back a string. Okay, at this point it will return a string, and that string is going to be logged on the console now. Okay,
So this first console log, this is due to this statement here. Okay. So why am I creating this service? Uh, just to separate concerns. I don't want to pollute the component with entire logic of the application. Uh, the services are basically used for business logic and interacting with the API services. So the entire code for interacting with the API services, I want to encapsulate that inside a service. I don't want to pollute the component for that. Okay. So what I'll do now is I'll take this heroes, okay, and inside this I'll write a method called get heroes, okay, and from here I'll return this. Okay, return, okay, and I'll say this, no, not here. I'll say this function has a return type of hero array, and okay. All right. So with this done, what I can do now is I can create a property here called heroes, which is going to be uh, hero array, and inside the constructor I'll do this dot heroes equals hero service dot get heroes. Okay, and I have changed the property name, so I need to change this one. Okay, so at this point everything should still work the same as it was previously. I have all those heroes, okay, but now they are coming out of a service. uh, any code which I want to write here uh, is not going to affect the actual component. Okay. Now, suppose at a later point, the ID of this guy changed and the name of this guy also changed. Okay. So I'll see the updated values, but I am not changing the component for this. The only responsibility of that component is to take heroes from somewhere and then just list out those heroes in this list, and whenever I select one of the heroes, its responsibility is to set one variable, and then this other component takes effect. Okay, at this point, do you have any questions? Can you guys hear me? हाँ जी सर। तो सर वैसे मेरा एक क्वेश्चन था कि सर्विसेज हम जो बना रहे हैं अभी यहाँ पे, ठीक है, तो सर्विसेज बेसिकली हमारा लॉजिक पार्ट रहता है सारा का सारा, जो लॉजिक बिल्डिंग है, जो भी हम लाइक अपना जो भी हम करना चाहते हैं फंक्शन वगैरह, वो सब पार्ट रहता है, या एपीएस कॉल्स जो होती हैं वो सब हमारी एपीएस सर्विसेज में रहता है? क्योंकि मेजरली जब किसी एंगुलर डेवलपर से बात करते हैं तो मेजरली सर्विसेज की बात करता है कि सर्विसेज में एपीआई कॉल्स भी होती है। हाँ, देखो दो तरह की एपीआई सॉरी सर्विसेज हो सकती हैं आपकी। एक सर्विसेज ऐसी होंगी जिनके आई जनरली बेसिकली डोंट राइट सर्विसेज विच हैव एपीआई कॉल्स जनरली। वाई सो? बिकॉज मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऐसी सर्विस बना लेता हूँ दैट इज़ जेनरिक इनफ टू बी यूज्ड इनसाइड कंपोनेंट्स। बट नाउ सपोज किसी एक कंपोनेंट में ना आपकी 10-20 एपीआई कॉल्स होने वाली हैं, ठीक है। अगर वो एपीआई कॉल्स हर एक कॉल के लिए भी आपको 7-8 लाइंस लग जाती हैं, और वो 10-20 के लिए 70 लाइंस का कोड तो आपका एपीआई कॉल्स का हो जाएगा। In such a case, I prefer to have a separate service which has only the API calls, and then we can have a service that does the computation also for us. Not many people extract out that thing into services, they write it inside the components only. But we can extract out business logic into services if that business logic is going to be used at multiple places. Now suppose आप एक अकाउंटिंग एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, और कुछ हेल्पर फंक्शंस ऐसे हैं जो कि आपको मल्टीपल स्क्रीन्स पे चाहिए। तो एक तरीका तो ये है कि हर एक कंपोनेंट में जा जाके वो कोड लिखना शुरू कर दो।
दूसरा तरीका ये है, आप एक सर्विस एक्सट्रैक्ट कर लो जिसके अंदर रिलेटेड फंक्शनैलिटी के फंक्शंस होंगे, और उस सर्विस को अलग अलग प्लेसेस पे इंजेक्ट करो और उस फंक्शन को यूटिलाइज कर लो. Did I make sense? Yes sir, yes sir. Okay. ठीक है. Any other questions? Not for now. Okay, cool. So at this point, I want to introduce something called RxJS. That can be a bit tricky at this point, but let's try to grab as much as we can. RxJS. So there is a function inside RxJS that is called off. I don't know how much sense I'm going to make here. Okay, so I have converted this, the return of this function into an observable of heroes. And I have to import this observable from RxJS. Okay. So RxJS is now giving me two things. One is this class type observable, and the other one is this function that is called off, and it basically returns an observable to me. Okay. And now I have to subscribe this observable in order to get those heroes. Okay. The functionality is going to be still the same, but this is an observable now. What an observable is, I don't want to explain it at this point. We'll talk more about this in a later section. But the only thing I want you to know is, ऑब्जर्वेबल के ऊपर डेटा डायरेक्टली नहीं मिलता. वी हैव टू सब्सक्राइब द ऑब्जर्वेबल. एंड if I tell you the literal meaning of this term observable is anything which you can observe for changes. इसका मतलब है कि इस चीज़ के ऊपर ना इन फ्यूचर चेंजेस हो सकते हैं, और जब भी कोई चेंज होगा ना, सो दिस सब्सक्रिप्शन विल गेट एन अपडेटेड वैल्यू ऑफ हीरोज. ओके. So अगर कुछ भी ऐसा है that can emit multiple values over time, so it is better to have an observable for that. And I'll give you an example, but first let's see if the application is working. Something seems to be unsaved. Change कर दिया मैंने. Okay, it is working. Okay, so everything is working. If I change this guy, it is getting changed. Okay, if I refresh the screen, I see the list. Okay, things are the same. Okay, let me show you the usage of an observable. There is another function in RxJS called from event. From event, it takes two arguments. First is the target. What is that document, and the second one is, okay, no, window. Give me a moment. Okay, cool. So I want to add the click listener, and I want to convert it into an observable. Okay, I'm going to subscribe this event. Okay, so previously what I would do is I would say document dot add event listener, and I would subscribe the click listener, and then the callback would have the event. Okay, and here also I can console log. So both these statements are exactly the same at this point.
मैंने इस इवेंट हैंडलर को एक ऑब्जर्वेबल में कन्वर्ट कर दिया और उसको सब्सक्राइब कर लिया, और यहाँ पे मैंने मैनुअली जावास्क्रिप्ट के तरीके से इवेंट लिसनर को सब्सक्राइब किया। ठीक है, सो नाउ एवरी टाइम आई क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट बोथ दोज शुड फायर। ठीक है, मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ सो दो इवेंट्स ट्रिगर हो रहे हैं। ठीक है, सो नाउ द वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन इज, अगर इससे काम हो सकता था सो व्हाई डू वी हैव दिस स्पेशल सिंटेक्स, राइट? एनीवन हैज दिस क्वेश्चन? यस, नो, एवरीवन ड्रॉप्ड? नो सर, इसमें तो अभी अभी समझ नहीं आ रहा है ये। अरे यस, ठीक है, ठीक है, इसमें इसमें ज़्यादा हाँ जी कुछ। सर, मेरे पास वैसे एक आंसर है, मे बी राइट हो, मैं बताता हूँ थोड़ा सा। हाँ हाँ। तो लाइक जितने भी सिंगल पेज एप्लीकेशन, जितने फ्रेमवर्क्स है ना, रिएक्ट एंड एंगुलर एंड वू जितने भी है, तो देयर स्पेसिफिक गाइडलाइंस देते हैं कि कभी भी अगर आपको डॉम में चेंजेस करने हैं, डॉम के इवेंट्स करने हैं ना, तो आप खुद से ये सब इवेंट लिस्ट लगा के या किसी डॉम के चेंजेस है वो खुद से मत करो। उसकी बजाय आप ऐसे ही जो फंक्शन है, फ्रॉम इवेंट्स हैं एंड जैसे रेक्ट में रेफरेंसेस होते हैं, तो वो यूज करके हम डॉम में चेंजेस करते हैं या डॉम के इवेंट्स को कैप्चर करते हैं। डायरेक्टली हम नहीं करते हैं डॉम में चेंजेस, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली डॉम में चेंजेस करेंगे देन तो हम इन फ्रेमवर्क्स को क्यों यूज कर रहे हैं, वो उनका जो फीचर सेट है वो हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। लाइक उनके जो फीचर्स हम यूज कर रहे हैं उनको यूज करने का कोई फायदा नहीं है। मे बी दैट्स व्हाई उन्होंने ये फंक्शंस एंड ये सब यूज करते हैं, सब्सक्राइब वगैरह। ठीक है, एनीवन एल्स वांट्स टू ट्राई? ओके, जॉरब ने जो भी बोला ना दैट इज़ कम्प्लीटली ट्रू, बट नॉट इन दिस कंटेक्स्ट। एंगुलर के अंदर देर इज़ अ स्पेशल क्लास कॉल्ड रेंडरर which is used to do the DOM manipulations. Angular also suggests not doing direct DOM manipulations. For that they have a special class if you want to do something like that. React, as he was saying, also has something like that. So yeah, that is true, and these frameworks suggest us not to do DOM manipulations directly. This thing is of a different context. Basically अब इन दोनों statements में फ़र्क क्या है? I cannot compose, and by compose I mean जो musicians होते हैं ना वो compose करते हैं। इसका मतलब क्या है? वो multiple beats को compose करके एक music बनाते हैं। ठीक है? So here also I cannot compose multiple event listeners into one, but I can compose multiple subscriptions into one. ठीक है? Let me show you. Suppose मेरी requirement ये है कि क्लिक के साथ जब तक एक की प्रेस ना हो जाए ना तब तक इसको एमिट नहीं करना वैल्यू को। ठीक है, सो आई विल से कंबाइन लेटेस्ट एंड आई डोंट वांट यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन्स। अभी सिंटैक्स समझना जरूरी नहीं है, आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी और द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, why I am using observables and not the native things. Document slash key down. Okay, so here this is going to be mouse mouse event and key event. Okay, and I need to wrap this thing inside these brackets. Mouse event and key event. ये जो फंक्शन में यूज़ कर रहा हूँ ना कंबाइन लेटेस्ट, what this does is it waits for both of these to emit at least once. ठीक है, and once both of them have emitted at least once then it starts to trigger these changes. ठीक है, let me show you. And at this point also I have done both kind of subscriptions. मैंने जो जावास्क्रिप्ट वे है उससे भी किया हुआ है और ये सब्सक्रिप्शन से भी किया हुआ है। अगर मैं कुछ क्लिक करता हूँ तो अभी अगर आप देखो तो सिर्फ एक ही इवेंट एमिट हो रहा है, क्योंकि वो जो सब्सक्रिप्शन था उसको मैंने कंपोज किया हुआ है कि जब दोनों चीज़ें होंगी तभी चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक की प्रेस कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने की प्रेस की तो यहाँ पे एक माउस इवेंट और कीबोर्ड इवेंट दोनों एमिट हुए। ठीक है,
एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन जब भी मैं की प्रेस करूँगा या माउस इवेंट करूँगा तो मेरे सब्सक्रिप्शन के दोनों इवेंट्स फायर होंगे. एम आई मेकिंग सेंस? मैं अभी सिर्फ की प्रेस करूँगा यहाँ पे. ओहो, अच्छा 3 ऑलरेडी हैं. अभी मैं टेक्स्ट बॉक्स पे एक की प्रेस कर रहा हूँ and I see 2 events emitted. One is the keyboard event and the other one is the mouse event. So basically I have composed 2 observables into one. I can't do this thing with this plain JavaScript concept. ठीक है? This is one example of it. This is not all about RxJS. RxJS is a very powerful library and at the same time sometimes very complex also. ठीक है? We'll try to cover only the basics of RxJS, which are extremely required in Angular. Um, yeah, but you can, if you are curious enough, you can go to the RxJS website and start reading about that. There's a whole lot stuff about it, and this is it for today. Any questions? सर मेरे पास मतलब काफी सारे ही क्वेश्चन हैं. तो हम लाइक जैसे हम इस चीज को जो हमने नीचे किया है कंबाइंड लेटेस्ट करके, वो तो ऐड इवेंट लिस्ट के साथ भी कर सकते थे. तो मतलब क्यों हम इसमें ही कर रहे हैं एंड उसमें वो ऐड चीजें इवेंट नहीं कर रहे लिस्टनर हैं? के साथ आप इवेंट को रोकते कैसे? सर वो रिमूव इवेंट लिस्टनर के नहीं. मैं एक बार स्क्रीन रिफ्रेश करता हूँ. मैंने उसको ये बोला है and mind you combine latest is just one of hundreds of functions available there. ठीक है? अभी मैंने क्या किया है, मैं अगर क्लिक करता हूँ ना तो ये सब्सक्रिप्शन फायर नहीं हो रहा, क्योंकि ये तब फायर होगा जब एटलीस्ट दोनों चीजें होंगी. हाँ. अब यही काम आप इसके साथ कैसे करते? मतलब इसके साथ हम लाइक कुछ कॉन्टेक्स्ट यूज करके कर सकते हैं, बट नॉट इजीली अवेलेबल है. बट आई थिंक सो वो भी हम कर सकते हैं. तो आई गेस मे बी इसके लिए तो शायद नहीं होगा. इसका जो मेन यूज केस है वो मे बी कुछ और है कि यही यूज केसेस के लिए हम यूज करते हैं. नहीं, के लिए या इसका यूज केस कम्प्लीटली अलग है. This is just to get you a glimpse of RxJS. That is what I am saying. RxJS, as I am saying, it is a very powerful library. उसको यूज़ करना अच्छे से अगर एक बार आ जाए ना तो आप बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो. हेलो. Someone tried to say something. हाँ सर, इसका एक यूज केस और भी हो सकता है ना कि फ्रॉम इवेंट में हम ऑपरेटर्स और ऐड कर सकते हैं, आउटपुट चेंज कर सकते हैं रिजल्ट की. एग्जैक्टली जैसे मैप ऑपरेटर लगा सकते हैं. हाँ जी, वो ऐड इवेंट लिस्टनर में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा शायद, तो इसमें हम बाकी ऑपरेटर्स लगा के आउटपुट चेंज कर सकते हैं. वो थोड़ा इजी होता है. एग्जैक्टली. सो मल्टीपल ऑपरेटर्स. यस. नाउ सपोज Jorav, you can means say something on the contrary, but अरे यार ये क्या कर दिया हमने. What I am going to do here is I am going to map this event event dot keychar, I think. पता नहीं, मुझे सही से याद नहीं है इसके अंदर ये होता है या नहीं. Let's try. क्या कर रही है? Did you mean map? नहीं भाई, ऑपरेटर्स में से लाना है. अच्छा, कंबाइन लेटेस्ट लगाना. मैं एक बार के लिए कंबाइन लेटेस्ट को हटा देता हूँ. आई एम नॉट श्योर की कैर इसके अंदर होता है या नहीं, बट आई एम गोइंग टू जस्ट ट्राई.
किसी को पता है क्या? जब हमने वो कोड प्रिंट किया था ना वहाँ पे ब्राउजर में, वहाँ पे शो कर रहा हुआ की कोड कर रहा है क्या? जब कीबोर्ड वाला इवेंट हमने डाला था, प्रिंट करवाया था। ठीक है, तो मींस शायद ये चल जाएगा, देख लेते हैं। जैसे की कोड होता है एंड सी कैपिटल, ओके वो वहाँ पे प्रिंट कर रहा था अभी हट गया। ओके, सो दिस इज गेटिंग अनडिफाइंड। बेसिकली मैं बता देता हूँ। की कोड CODE हाँ जी। and let me comment this one also. तो मैं जो भी टाइप करता जा रहा हूँ उसका की कोड एक्सट्रैक्ट कर रहा है ये। सो ऑब्वियसली आप इसके साथ भी कर सकते थे, बट दिस इज़ क्वाइट अ नीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट। मैंने एक स्ट्रीम को कन्वर्ट कर दिया है, अ स्ट्रीम ऑफ इवेंट्स टू अ स्ट्रीम ऑफ नंबर्स, एंड देन आई हैव सब्सक्राइब टू इट। ठीक है, now suppose I want to double this number every time, so I can say times 2। ठीक है, सो जब आप रिएक्टिव प्रोग्रामिंग करने लगते हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप स्ट्रीम्स के साथ कर सकते हो, which otherwise are possible, not saying they are not possible at that point, but streams make them easy to do। ठीक है, all right, that's it from my side today।